Hello, good morning, children. Today we are going to study about your last chapter. Although I have extended this video earlier also, but today I want to get its revision another way. And earlier, its chapter's name was Recent Developments in Indian Politics, but now its name is changed. But the whole of the matter is same, doesn't no worries at all. Recent developments in Indian politics. Earlier this was the name of your chapter, but now its name has been changed, and it is like that Indian politics trends and developments. Indian politics trends and development. तो ऑलमोस्ट टोटल जो सब्जेक्ट मैटर है दैट इज सेम बट टू more topics have been added here regarding that, and no worries that I'll send you in my next video. Today we'll revise the previous one whatsoever we have done. In this chapter we'll study about the very, we can say, wide concept whatsoever developments we have studied till now in this book, as well as from previous book also, that is your world politics. And these developments are very complex, for various kinds of the developments have been made in Indian politics, and it is very near to impossible to change it, to say it that it is like that only, because as it is clear from the name politics, so it always keeps on changing, takes its various forms. And when we talk about in this chapter, we'll study about what are the implications of the rise of coalition politics for our democracy. Coalition, as you know, that it is the form of government when single party do not get majority, different political parties come together to form a government. And in this, there is one issue of Mandal Commission also. What is mandalization all about? In which ways will it change the nature of the politics representation? And then our next issue is, what is the legacy of Ram Janam Bhoomi, that is Ayodhya movement, right? Ayodhya issue. Although now it has been resolved, this issue has been resolved now, but according to your book, there is different type of development, and Ayodhya demolition for the nature of the politics mobilization, and what does the rise of new policy senses do the nature of Indian politics choice. Like I have categorized according to your book this into five issues, right? Five issues. First is there, I have mentioned here that we have studied till now what happened in our previous chapters. Although there are two chapters that are not in your syllabus, regional aspirations and motivations, but to read this chapter, reference of those issues is must. That's why I'm telling you that regional aspirations are very very important. Like हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि कुछ स्टेट्स में कांग्रेस का सफाया हो गया था और कुछ स्टेट्स में बीजेपी आई और सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, बट ये 18 मंथ से ज़्यादा नहीं चल पाई थी इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स के कारण, जहाँ लैक ऑफ एक्सपीरियंस वी कैन से, राइट. As we have seen that the Congress domination was there in the previous elections. Every time Congress dominated for the different falling years regarding Indian politics. The very first and most crucial development I have mentioned here also, that 31st October 1984, right? What happened there? That there was a murder of our Honorable Prime Minister Mrs. Indira Gandhi, right? And Indira Gandhi का assassination हो गया था, और you know why it was there in your previous chapter. Due to Blue Star operation, her own bodyguard
murdered her. So this shows that regional aspirations are how much strong, how they are strengthened by the regional aspirations, state-wise issue, caste, color, creed, or we can say class-wise issues. So that should be given to the democratic people, citizens living in a particular country. If they are, if it is not, to up to what extent they can go, that is very clear. That is visibility from the case of this assassination of Mrs. Indira Gandhi, 31st October 1984. Just after that, you have seen in your previous chapter also, Mr. Rajiv Gandhi became the prime minister, right? Just after that, but within time limit, after that, when elections were there in 1984 election, that era of Congress system, only that was somewhat फिर हम वही वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि यहाँ फिर कांग्रेस का सफाया हो गया था इंदिरा गांधी के बाद, जब प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी बने थे, और उसके बाद जस्ट जब इलेक्शन हुए थे 1989 में, तो एट दैट टाइम कांग्रेस पार्टी कैन विन ओनली 415 सीट्स इन लोकसभा एंड 1984 these seats were only 197, right? 80 the party had won many, बहुत देखो इससे पहले इन्होंने 415 सीट्स ली थी, और अब जब 1989 में दोबारा इलेक्शन हुए तो इनकी सिर्फ 197, लेस दैन 50% सीट्स इनको मिली थी इनके खुद के कोटा से, राइट? जितनी इन्होंने पहले ली हुई थी, अप्रॉक्सीमेटली 425 सीट्स थी इनकी. तो कांग्रेस इम्प्रूव्ड इट्स परफॉर्मेंस एंड कम बैक टू power soon after the mid-term election 1991. But the elections of 1989 marked the end of what political scientists have called the Congress system. राइट? हमने प्रीवियस 6th चैप्टर में भी ये पढ़ा था कि कांग्रेस बार बार अपने आप को रेस्टोरेशन करने के लिए डिफरेंट मेजर्स अडॉप्ट कर रही है, बट बीजेपी भी है, बट बीजेपी भी ज़्यादा स्टेबल नहीं हो पा रही. देन वंस अगेन देयर इज़ अ रेस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस पार्टी, बट इट इज़ पॉलिटिक्स. वी कैन नॉट से दैट दिस पार्टी इज़ गुड, दैट इज़ गुड. देयर अल्टरनेट चेंजेस कीप्स ऑन गोइंग. So we don't want any party system in our mind, but we have to study the politics of the party system. That is very, very important, being a student for you. Be sure that Congress remained an important party and ruled the country more than other party since the time period 1989. But till now, whatsoever you have studied, you may see that how it has been success to be like that. So then next one is, we have to study it very carefully. The second it is given on your book also. वहाँ एक कार्टून दिखाया हुआ, कांग्रेसलेस गवर्नमेंट अमूल द मेजॉरिटी votes on page, very first page of your book. Then second development was the rise of Mandal issue. Second development was there, the rise of Mandal issue. That issue was there that in 1990 the government implemented a reservation policy of OBC advised by Mandal Commission. You have studied in your previous class also, 9th class, right? There was Mandal Commission, BP Mandal established. Of one memorandum was given there, right? So office memorandum, that is called legal application for the 27% reservation for the OBCs. That also took a lot of time to get it passed, caused massive violent unrest in the country, and started Mandal politics. It is very famous during those time in the media, right? Because I was at that time mature, right? Mean to say, I have passed my graduation during that time, and in my PG during those days. So that was very common issue in the newspapers. I have seen it with my own experiences, that Mandal issue was a nationalist politics. 1990, to implement the recommendation of Mandal Commission,
There were many violent anti-Mandal protests in the different parts of the country. This dispute between the supporters and opponents OBC reservation was known as the Mandal issue, and it played an important role in shaping the politics since 1989. So in this way, this was also very important issue during that time. Then third one, any initiation of structural adjustment program or new economic reform. When we talk about these new economic reform, in your economics and in other, you have studied about this, that is implementation of LPG. LPG, L stands for liberalization, P for privatism and G for ग्लोबलाइजेशन. तो हमने ये यूएसए और सॉरी रशिया, ये हमारे रिलेशंस में हमने पॉलिटिक्स और रिलेशन पढ़ा था. तो इसमें ये इट वॉज स्टार्टेड बाय राजीव गांधी जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑल्दो इट वॉज देयर इन द प्लानिंग ऑलरेडी. ठीक है. तो इसमें राजीव गांधी चेंजेस फर्स्ट बिकेम वेरी विजिबल इन 1991. राइट. उनको रेडिकल चेंजेस के बारे में भी जाना जाता है. तो इसमें उन्होंने ये हमारी पॉलिसी को चेंज कर दिया था, जिसमें हमने प्राइवेटिज़म, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को इम्प्लीमेंट किया था वास्ट लेवल पे. एंड फॉर द मासेस ऑल्सो these politics have been widely criticized of various movements and organizations, but the various governments that come to power in this period continued. भाई ये तो देखो वेरी नेचुरली, जब भी कुछ होता है कुछ लोग उसके फेवर में होते हैं, कुछ अगेंस्ट में होते हैं. व्हाट इज़ द ट्रूथ, व्हाट इज़ गुड, व्हाट कैन बी इम्प्लीमेंटेड फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट, अप्रोप्रिएट डेवलपमेंट फॉर द कंट्री, दैट शुड बी देयर. राइट. तो लेकिन जो कांग्रेस सिस्टम था 1991 में ऑलमोस्ट एक तरफ से तो ख़त्म टाइप था, क्योंकि इनकी जो देयर वर सम बहुत बारीकियां थी इनकी पॉलिटिकल में. लेकिन सम हाउ दिस LPG पॉलिसी हेल्प्ड इंडियन इकोनॉमी, इट्स GDP ऑल्सो ग्रो, रिलेशन विद अदर कंट्रीज. राइट. तो रिगार्डिंग दैट इट वॉज वेरी, आई वुड से, सक्सेसफुल पॉलिसी. और जो फोर्थ इशू हमारा रिसेंट डेवलपमेंट्स का है, ये है हमारा अयोध्या इशू. ठीक है. दैट इज़ बाबरी मस्जिद. ऑल्दो नाउ इट हैज़ बीन रिजॉल्व. अभी आपने देखा होगा कि 5 अगस्त में इसका इनागुरेशन था, वहाँ पे मंदिर बना दिया गया है. राइट. बट बिफोर दैट देयर वॉज इशू रिगार्डिंग दैट के कुछ लोगों को लग रहा था कि यहाँ मंदिर बनना चाहिए, कुछ को ये लग रहा कि यहाँ मस्जिद बननी चाहिए. और ये 1992 में एक बार इसको लॉक कर दिया गया था. दिस सिम्बोलाइज्ड एंड ट्रिगर्स वेरियस चेंजेस इन द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री एंड इंटेंसिफाइड द डिबेट्स विद इन द कंट्री, द नेचर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एंड इट्स सेकुलरिज्म. देखो बड़ा ये डेलिकेट मामला था. अगर इसमें गवर्नमेंट इंटरफियर कर रही थी तो इट सीम्स लाइक दैट के इंडिया इज़ नॉट अ सेकुलर. ठीक है. जब भी एक धर्म, अगर मान लो वहाँ मंदिर बन जाता है तो अभी भी ये इशू है, तो मुस्लिम्स को लगेगा कि गवर्नमेंट ने मंदिर बना दिया, और मस्जिद बना दे तो हिंदुओं को लगेगा. बट सम हाउ दिस अवर BJP गवर्नमेंट ऑलवेज फेवर द हिंदुत्व. राइट. तो दैट इज़ ऑल्सो न्यू इन न्यूज़ ऑल्सो कि ये तो होना ही था, मोदी ने ये करना था. You have to be aware of that, but don't go for criticism here and there. But you should know what is going on to improve your political history. Right? What is going in the politics of India, that is far important for you people. And fourth important our issue, Babri Masjid, even symbolized and triggered various changes in the politics of the country and intensified the debates among the different people. So that was like that, this one, demolition of dispute structure Ayodhya in December 1992. So these developments are associated with the rise of BJP and politics of Hinduvata. Right. And this was ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान.
सबको सन्मति दे भगवान, इस टाइप के कार्टून्स आपकी बुक में दिए हुए हैं कि वी मस्ट नॉट बी अगेंस्ट एनी रिलीजन बीइंग इंडियंस। बट उसके बाद क्या हुआ था, जब ये अयोध्या मामला 1992 में था, तो 1991 में राजीव गांधी वॉज ऑल्सो असैसिनेटेड इन मे 1991 बाय लिटे ग्रुप, एंड दैट इज़ आल्सो लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। क्योंकि देखो बेटा, इसमें ये था कि जब भी हम किसी का कुछ अच्छा सोचते हैं उसका बुरा हो जाता है, तो फिर हमें अपने आप के बारे में रीथिंक का मौका होता है कि वी हैव टू रीथिंक अबाउट व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तो यहाँ मैं लिटे ग्रुप के साथ आपको ये बताऊंगी, इट वाज ग्रुप ऑफ श्रीलंका, राइट। तो इंडियंस ने श्रीलंका की हेल्प की थी, तो बट इंडिया ने एक पंचशील पॉलिसी अडॉप्ट की हुई है विद सम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, एंड मोर ओवर इट इज़ द फीचर ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो, राइट। हमने जो नैम पॉलिसी अडॉप्ट की है, तो उसके अकॉर्डिंग वी मस्ट नॉट इंटरफियर एनी अदर कंट्रीज इंटरनल अफेयर, इफ़ वी डू सो। तो ऐसा ही कुछ इसके पीछे हिस्ट्री थी। एक लिटे ग्रुप था इनका श्रीलंकन का, तो इंडिया ने उनके अगेंस्ट थोड़ी श्रीलंका कंट्री की मदद की थी, बीइंग अ डेमोक्रेटिक हेल्पिंग हैंड। बट उस ग्रुप को अच्छा नहीं लगा। एज अर्लियर मैंने मेंशन किया कि जब भी कुछ करते हैं ज़रूरी नहीं सब लोग उससे सहमत हो, कुछ अगेंस्ट होते हैं, कुछ फेवर में होते हैं, कुछ क्रिटिसिज्म करते रहते हैं, कुछ इन बिटवीन होते हैं, देखते हैं कि किस तरफ पलड़ा भारी हो हम उसी तरफ हो जाएंगे। तो दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द पॉलिटिक्स। तो इसी टाइप से अभी जैसे अफ़गानिस्तान का इशू भी चल रहा है, हमने अरेब इज़राइल भी पढ़ा है, तो यही है कि अगर हम किसी की मदद करना चाहते हैं, करेंगे भी, तो उसमें ज़रूरी नहीं कि हर टाइम लोग हमें अच्छा ही कहेंगे। समथिंग लाइक हैपेंड विद राजीव गांधी ऑल्सो, एंड अवर फिफ्थ एंड फाइनल इशू वॉज दैट assassination of Rajiv Gandhi further led to change in the leadership of the Congress government. Sorry, when he was on election campaign in tour in Tamil Nadu, at that time he was assassinated by human bomb. That is very disastrous. I can say that results for the Congress. His mother was also murdered. He was also assassinated. So point is to be noted what is issue. So in election of 1991, Congress emerged as the single largest party, and following the Rajiv Gandhi's death, the party once again chose Narasimha Rao. BP Narasimha Rao was the new Prime Minister of India in that after 1991, and after that 1 May 1996 and 25th October, these are the pictures, and 25th October 2004, Mr. Rajiv Gandhi, sorry, Mr. Manmohan Singh was the Prime Minister of India, and these were the headlines during that time. And next is, now there is an era of coalition government. Era of coalition government. Okay, thank you students. This I'll teach you in my next video. Take care, do reading, right? In this chapter you have to make reading. Keep in mind the previous chapters discussion also. Thank you. Bye.